Good morning, children. Today we are going to start exercise 16C. First, we will learn about formulas of area of triangle, area of parallelogram. Formula of area of triangle is equal to half into base into height. तो बच्चों इसमें बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है देखिए. इन ट्रायंगल ABC it is height, it is base. BC is base and its height is AB. हाइट में हमेशा इट इज़ एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं. इसके फॉर्मूला में कभी कभी लिखा हुआ आता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड. अब आपका एल्टीट्यूड इट इज़ ड्रॉ फ्रॉम द बी इन दिस ट्राइंगल, तो इसके लिए बेस BC नहीं होगा. फिर इफ़ एल्टीट्यूड इज़ BE देन इट्स बेस इज़ AC. जहाँ से जहाँ तक ये ड्रॉ हुआ है उसका ये बेस होगा, तो हम इसको बेस इसका क्या लेंगे AC. तो इसमें ये क्या है आपका हाइट और AC इज़ बेस. नाउ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में अलग से कहीं पर भी एल्टीट्यूड नहीं होता है. इसमें एल्टीट्यूड यहीं पर ही, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, तो इट इज़ बेस and it is height. Clear? In right angle triangle, base is this and height is this. So the formula of area of triangle is half into base into height or altitude. If area of triangle is given, so how we can find it? Base of triangle is equal to 2 into area of triangle divided by height. Similarly, if you want to find the height of triangle, then height of triangle is 2 into area of triangle divided by base. Now area of parallelogram. Area of parallelogram is equal to base into height. It is the figure, some figures of parallelogram. देखिए, अगर आपका यहाँ से ऐसे एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो आपका बेस क्या होगा इसमें? DE is height and its base is AB. ये बच्चों कई तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिया है. मान लिया एल्टीट्यूड इज दिस ABCD, तो इट इज हाइट एंड इट्स बेस इज BC. सिमिलरली अगर आपको यहाँ से एल्टीट्यूड दिया हुआ है ऐसे ABCD, तो हाइट इज दिस एंड इट्स बेस इज DA. क्लियर? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. If area of parallelogram is given and its height is given, then base of parallelogram is equal to area of parallelogram divided by height. If base is given, then height of parallelogram is equal to area of parallelogram divided by base. Now we will start exercise 16C. Question number 4. Find the area of each of the following triangle. It is a triangle, it is its height and it is its base. We write here area of triangle is equal to half into base into height. It is base, it is height. Now by putting the value 1 upon 2 into 6 into 7.4, 2 3s are 6, 7.4 multiply by 3, 3 4s are 12, 3 7s are 21 or 122, 22.2 centimeter square its area. Clear? Now it is B part.
of 16C, question number 4. In this question, we write the name of triangle A, B, C. First we write formula, area of triangle is equal to half into base into altitude. बच्चों आपको altitude भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसमें अब देखेंगे हाफ बेस क्या है बच्चों इसका। अब आप BC बेस नहीं लेंगे क्योंकि एल्टीट्यूड किस पर ड्रॉ है, फ्रॉम द सी to AB, from the sea from AB, so its base is AB and height is CD. We write here base is equal to AB and altitude it is equal to CD. Now by putting the value 1/2 into base is equal to 10, 7.5, CD is equal to height is equal to 2 5s are 10. Now 7.5 multiply by 5, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 35 or 2 37, 37.5 centimeter square its area. Now part C of question number 4. First we write the name of the triangle ABCD. Area of ABCD triangle ABC is equal to half into base into height. तो बच्चों इसमें बेस कौन सा होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड इज ड्रॉ फ्रॉम A to BC, so its base is BC and altitude is AD. तो we write here BC into AD. Half into BC is equal to 6 into 5, 2 3s are 6, 3 5s are 15 centimeter square its area. Clear? Now question number 5. Find area of following parallelogram. Parallelogram A, B, C, D. Area of parallelogram is equal to base into height. Now what is the base? CB is not a base. It's because altitude is this, so base is AB. We write here AB multiply by, इसका नाम अलग से दे सकते हैं EF. EF. AB is equal to 15, EF is equal to 12. 12 5s are 60, 12 1s are 12 or 6, 18. So what is the area of this parallelogram? 180 centimeter square. Now B part. Similarly we write name A, B, C, D, E. अब इसमें बेस क्या होगा? AB और हाइट कितनी होगी? DE. We write here area of parallelogram is equal to base into height. Base is AB and height is DE. 40 into 18. 18 4s are 72, 0 का 0. तो what is the area? 720 centimeter square its area. Clear? Now C part of question number 5. First write name A, B, C, D, E. Area of parallelogram is equal to base into height. Base is equal to AB into height is equal to DE. But AB, value of AB is not given. तो बच्चों in a parallelogram opposite sides are equal. क्या होती हैं? Equal होती हैं. तो AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के क्या होगी? इक्वल. AB कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया है? 40. 7 4s are 28, 0 का 0. तो कितना आ गया? 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स एरिया. क्लियर?
Now question number 7. The area of and the corresponding base of a triangle are given below. Find the altitude of the triangle. Area of triangle is 104 centimeter square. Its base is 13 centimeter. Find the altitude. इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? हाइट आपको फाइंड करनी है. मैंने आपको बताया था इफ एरिया एंड बेस आर गिवन देन हाइट ऑफ ट्राइंगल is equal to 2 into area of triangle divided by its base. 2 into area is equal to 104. 13 8 za 104, 8 2 za 16. तो altitude of triangle is 16 centimeter. Clear? Now B part of question number 7. Area of triangle 153 meter square, base is equal to 17 decimeter. तो बच्चों दोनों को सेम यूनिट में करना होता है, तो डेसीमीटर कन्वर्ट इनटू द मीटर. तो वी राइट हियर 1 decimeter is equal to 1/10 meter. 17 decimeter is equal to 17 into 1/10. It means 17/10 is equal to 1.7 meter. Now they are meter. Now we write here height of triangle is equal to 2 into area of triangle divided by base. 2 into area कितना है बच्चों? 153. And now height is equal to base is equal to 1.7. यहाँ से डेसिमल रिमूव किया इंटू 10. 17 9 ज़ा 153. 9 10 ज़ा 90. 2 into 90 is equal to 180 meter its height. Clear everyone?